let's move on to our next topic. Having an object at a certain angle on the bow at a given distance. Let's first of all see what all data, what all information is provided to us in these type of questions. The information which is given is the initial position of the ship, the bow angle which is required to be made, and the distance at which that bow angle should be made. What we are required to find out in these questions is the course to steer. So to put it simply, we are required to find out what course should the vessel steer from its initial position, from its starting position, so that a certain object, a certain landmark is at a specific bow angle at a given distance. Let's go into the method to be followed in these type of questions. Now this question is slightly different from the previous questions which we have done. In the questions which we have done till now, we pick up the information from the question and plot it on the chart. Once the plot is there, we can read out the answer. Beta, just give me 1 minute. हाँ संजीव, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. अच्छा अच्छा, चार्टवर्क का रिजल्ट मैं तुम्हें ना भेज देता हूँ, आज भेज देता हूँ. ट्राई करूँगा 12-1 बजे तक भेज दूँगा. हाँ ओके, नो प्रॉब्लम, भेज दूँगा. ओके. हाँ हाँ, सेकंडमेट सीनियर का मैं 1:30 बजे तक पक्का आ जाएगा तुम्हारे पास ना, 1:30 तक. ओके ओके. Okay, let's move. Now the information which is provided in this question is not sufficient to make the plot. We need to do some prior calculation before we start the chart plotting. So what calculation we do? We have to make a rough diagram, and using this information which is provided, we have to calculate the nearest distance to that particular object, and it can be easily done using plane trigonometry. So let me now show it to you. How do we make this rough diagram and how do we obtain the nearest distance to the object? Now let's assume that the object which is given to us is at this particular location named as A. It could be a lighthouse. Let's assume that the initial position of the ship is here at this particular location. And let's assume that this particular course, the red color course which you see on the diagram, is the course to steer. Let's assume that when the ship moves on this CTS and it reaches at this particular point, which is specified as B in the diagram, the object is at the given bow angle. So if we draw a line joining this point B with the lighthouse with the object, now this provides the direction in which the object is, and it is at this particular instant that the object is at the given range. Whatever distance is given to us, the object is at that particular distance when the ship reaches at point B. Also, the bow angle which is made at this particular instant, you can see the bow angle.
The bow angle which is made is the one which is required. So at point B, the object is at the required distance, making the required bow angle. Now what we do from here is, from the lighthouse or from the object, we drop a perpendicular to our CTS. The point where the perpendicular meets the CTS line, we have marked it as C, and this angle C is a right angle. This is a perpendicular to the CTS line. And now if you look carefully, the triangle ABC, which is made, is a right angled triangle. Angle C of this triangle is a right angle. Angle B of the triangle is the bow angle which we are required to make. Side AB is the distance of or the range from the object, and side AC is the perpendicular dropped from the object to our course to steer. Now the side AC also provide us with the nearest distance which the vessel will be from the lighthouse. Now if you look carefully in this diagram, the side AB, green color side, is the hypotenuse. Hypotenuse is the side opposite to the right angle in the triangle. So this side is the hypotenuse, and considering the bow angle, side AC is the perpendicular. Now if we use the ratio of sine theta, the ratio of sine theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. So in this triangle, if I apply the sine theta ratio on the bow angle, it gives me sine of the bow angle is equal to perpendicular, which is AC. AC is also the nearest distance which the vessel will be from the lighthouse, divided by hypotenuse, which is side AB, and it is the range at which the light is to be at that particular bow angle. Now if you look carefully in this equation, the bow angle is given to us in the question. It is provided. The range at which the light should be at this particular bow angle, which is side AB of the triangle, is also provided in the question. The distance is given. The only unknown in this equation is the side AC, or the nearest distance. So once we fill up the values of bow angle as well as the range, we can easily calculate what will be the nearest distance to that particular object when we move on the required CTS. So this is an important formula which you should remember. Sine of the bow angle is equal to nearest distance upon range. So using this formula, we calculate the nearest distance from that particular object. And once the nearest distance is known to us, then we can easily plot it on the chart and get the required answer. सर एक क्वेश्चन था इसमें, आप कह रहे थे कि जैसे हमें इसमें सीटीएस निकालना होता है तो हम बी से ये एंगल जो बाउ एंगल हमने ड्रॉ किया है, हम ड्रॉ कैसे करेंगे ये? बेटा ड्रॉ करना मैं अभी बताता हूँ, मुझे बताओ नियरेस्ट डिस्टेंस निकाल लोगे? यस सर। नियरेस्ट डिस्टेंस निकाल लोगे ना? यस सर। बस ड्रॉ की टेंशन ही नहीं है बेटा, अभी बताऊंगा कि ड्रॉ कैसे करना है। ओके सर। ओके, सो और डाउट बताओ बेटा। Okay, so shall we see a question now on the chart where we will calculate this nearest distance first and then we will draw?
Yes, sir. Okay, beta. All right. Let's try to understand this question using a practical example on the chart. The question says a vessel is stopped in position 52 degrees 00 minutes north and 007 degrees 00 minute west. Find the course to steer to have the hook headlight 30 degrees on her port bow when 7 miles off. Also find out the position where this takes place. So beta, is the question clear? Any Yes, doubts in sir. the question? Okay, all right. Let's see the solution now. So first of all, as we discussed just now, we will make a rough diagram and using the formula, which is sine of bow angle is equal to nearest distance upon the range of the object, we will find out what will be the nearest distance we reach to that object moving on the required CTS. So in this particular question, the bow angle is given to be 30 degrees. So it becomes sine of 30 degrees. Nearest distance needs to be calculated and the range at which this bow angle should happen is 7 miles. So putting these two values in the formula, it tells us the nearest distance to the light will be 3.5 miles. Now once we obtain the nearest distance, we can start our plotting on the chart. So let's first identify the lighthouse. We have the Hookhead Lighthouse at this particular location. Now the vessel is at 52 degrees north and 7 degrees west. So let's mark the position of the vessel. This is the latitude 52 degrees north and this is the longitude, which is 7 degrees west. The initial position is plotted on the chart. Now in the next step, we are going to draw a circle centered at the Hookhead Lighthouse having a radius equal to the nearest distance. So we have calculated the nearest distance, it is 3.5 miles. So I keep my compass centered at the Hookhead light, open it up equal to 3.5 miles radius. The compass is opened up to a radius of 3.5 miles. This 3.5 miles is the nearest distance which we will be to this particular light, and draw a circle. So we have the nearest distance circle plotted on the chart. Now from our initial position, we draw a tangent to this circle. So we have this tangent shown on the chart. The tangent is drawn to the nearest distance circle. Now this tangent line which we have drawn is our course to steer. So once we have this line on the chart, we can use our parallel ruler to read it using a compass rose. And in this particular case, the course to steer comes out to be 040 degrees. Now to find out the position
where this lighthouse comes at 30 degrees bow angle on our port bow, what we have to do is, again, we pick up our compass, center it on the lighthouse. The compass is now open equal to the distance off. The distance off which we are required to make is 7 miles off. So we keep our compass 7 miles radius centered at hook headlight, and we draw an arc in such a way that the arc cuts our course to steer. So you can see the arc on the plot now. This particular arc is centered at the hook head lighthouse. The radius of the arc is equal to the distance off, which is given as 7 miles. And this arc cuts our CTS at this particular point. Let's name that point as B, Bravo point. Now let's join the Bravo point with the lighthouse. So you can see this green color line AB on the plot. Now this green color line AB represents the bearing of the lighthouse when the ship is at point B. So this is the position. The B point is the position at which this particular light will be at a distance of 7 miles, and also the bow angle which is made here. You can see this green color angle shown in the diagram. This is the bow angle. The bow angle which will be made at this particular position will be equal to the bow angle which was required in the question. So the lighthouse will be at 30 degrees bow angle, and it will be at a distance of 7 miles from the ship when the ship reaches at point B. So we have found out the CTS, the course to steer, to have this object at 30 degrees on our port bow when 7 miles off. We have also found out we can read out the position B, latitude and longitude from the chart, what was required. So that completes our question on finding out the course to steer to have the hook headlight 30 degrees on our port bow when 7 miles off. So beta, have a good look at the plot. You have the procedure given on the left side also, and the plot is there on the right side on the chart. Let me know any doubts which are coming in your mind. सर अगर दो पोजीशन सर्कल एक ही लाइन से एक ही राइट से हमें गिवन होते हैं तो उससे हम पोजीशन निकाल सकते हैं सर. ओके, सो ये क्वेश्चन तो क्लियर है ना बेटा? सर ये जो गिवन जो पोजीशन दी हुई है, राइट, इससे जब हम ये लाइट हाउस जो सरकमफेरेंस जो हम लोगों ने जो सर्कल ड्रॉ करा हुआ है 7 माइल का, राइट, इसका जब सरकमफेरेंस पे जब हमें लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सब 30 डिग्री आएगा बीच में एंगल. ओके, यू मीन टू से दिस आर्क व्हिच वी हैव ड्रॉन एट पॉइंट बी? यस सर. राइट बेटा, जब आप ये आर्क ड्रॉ करोगे तो एंगल ऑटोमेटिकली 30 डिग्रीज आएगा. इनफैक्ट आप ऐसा भी कर सकते हो, जो भी आपका कोर्स टू स्टीयर आया उसमें ये 30 डिग्री अप्लाई करके इसकी बियरिंग निकाल लो और आप ये लाइन को ड्रॉ कर दो. लेट अस से कोर्स टू स्टीयर आया 040, सो 30 डिग्री सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसकी बियरिंग कितनी हो जाएगी? सर कितना आया कोर्स टू स्टीयर सर?
040 is the course to steer. 30 degree 010 sir. वेरी गुड. तो अगर आप अपने पैरेलल रूलर को 010 पे अलाइन करके भी लाइन ड्रॉ करते हो, इट विल एग्जैक्टली कट एट दिस पॉइंट ओनली. ओके सर. ओके, सो दोनों केसेस में आपको यही पॉइंट मिलेगा. यस सर. ओके, और बताओ बेटा इसमें सर डाउट्स. टेंजेंट तो सर ये सी पॉइंट पे जो टेंजेंट है ये दूसरी साइड पे हो सकता था. राइट, बिल्कुल सही है बेटा, यू आर राइट. ये टेंजेंट तो हम इधर भी ड्रॉ कर सकते थे, तो हमने इसे राइट साइड में ही क्यों ड्रॉ किया? लाइट हाउस के वेस्ट में क्यों नहीं चले गए? सर वो लाइट पोर्ट बाव पे दी है ना इसलिए. वेरी गुड बेटा, लुक एट द क्वेश्चन. द लाइट शुड बी 30 डिग्री ऑन हर पोर्ट बाव. सो अगर हम इसके वेस्ट में टेंजेंट बनाते तो लाइट हमारे स्टारबोर्ड में आ जाती ना. यस. That's why we did not make that. ओके, और बताओ बेटा, और क्या डाउट्स हैं? सर ये जो हमने आर्क लगाई ये टेंजेंट पॉइंट से बैक साइड में लगाई ना. आई डिडंट गेट मतलब यू वो बेटा. जो मैरून कलर की आर्क की बात ये कर सर रहे हो आप? ये वाली. यस Okay. सर यस सर. ये जो ये सर आर्क हमने है इस बेटा, पॉइंट सी से लगाई ना. नहीं बेटा, ये पॉइंट सी से नहीं है. ये आर्क सेंटर्ड है हुक हेड लाइट हाउस पे, यहाँ पे. दिस इज वेयर इट इज सेंटर्ड. और इसका रेडियस कितना है? द रेडियस इज 7 माइल्स. ओके सर ओके. ओके, क्योंकि हमें लाइट हाउस से 7 माइल्स ऑफ आना है ना. यस सर ओके सर. ओके, और डाउट्स बताओ बेटा. क्लियर सर. ओके, वेरी गुड. अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करता, जैसे मैं तो बेयरिंग मतलब वो दे रखा है कि कोर्स से 030 पोर्ट बाव पे होना चाहिए और 7 माइल पे होना चाहिए. अगर मैं लाइट हाउस से अपोजिट बेयरिंग ड्रॉ कर देता पहले ही, तो मेरी शिप की पोजीशन तो तब भी आ सकती थी ना सर. ओके बेटा, ऐसा करते हैं जैसा आप बोल रहे हो ना. वी कैन गो ऑन द चार्ट एंड सी वेदर दैट विल बी एप्लीकेबल और नॉट. गिव मी अ मिनट. ओके सर. ये लो बेटा, अब हमारे पास क्वेश्चन भी है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में हमारे पास चार्ट आ गया है. तो अब तुम बताओ बेटा कैसे करेंगे. सर हम अपनी पहले फिक्स पोजीशन ड्रॉ कर देंगे जैसे पिछले ओके, ये ड्रॉ हो गई बेटा. सर अब जैसे कि हमें क्या रखा है कि 030 हमारे पोर्ट बाव पे था, तो 30 डिग्री में मैं वहां से अगर 210 की बेयरिंग लेता हूँ और 7 माइल पे कट करता हूँ. लाइट हाउस से 210 की बियरिंग लेते हैं हम, राइट. यस सर. सो ये मैंने लाइट हाउस पे 210 की बियरिंग जो है ये ड्रॉ कर दी. लेट अस से ये बियरिंग आ गई हमारे पास. अब 7 माइल्स कट ऑफ कर दिया. ये मैंने 7 माइल्स कट ऑफ कर दिया. ये पोजीशन आ गई. लेट्स कॉल द इनिशियल पोजीशन एज A. लेट्स कॉल द फाइनल पोजीशन एज B. अब बेटा Yes, AB को ज्वाइन कर दें. यस सर. तो सीटीएस आ सकता है ना सर? एक मिनट बेटा, अभी ज्वाइन कर देते हैं. AB को हमने ज्वाइन कर दिया.
नाउ बेटा ये मुझे बताओ कि क्या गारंटी है जब हमारा शिप यहाँ पे पहुंचेगा इस ट्रैक पे चलते हुए, तो ये लाइट हाउस 30 डिग्री पोर्ट बाव पे होगा? थर्टी डिग्री पोर्ट बाव पे होने के लिए अगर आपने ये बियरिंग 210 बनाई है, राइट, Yes, अगर ये 210 बियरिंग बनाई है आपने, तो आपका कोर्स जो है ये 060 होना चाहिए, 060। अब A to B कोर्स 060 बनेगा, गारंटी है? सर वैसे होना तो चाहिए ना, अगर 30 डिग्री मैं लेके आ रहा हूँ उसको, तो 30 डिग्री का अगर अपोजिट कोर्स में ड्रॉ कर रहा हूँ, अपोजिट बेयरिंग ले रहा हूँ, 7 माइल पे काटूंगा तो बात तो वही आनी चाहिए ना सर। बेटा आप मुझे ये बताओ कि ये 210 कहाँ से आया? सर जो 30 डिग्री 030 एंगल बना रहा हूँ ना मैं उस कोर्स पे जाते हुए, तो उसका अपोजिट ले रहा हूँ मैं। ये किसके साथ बना रहे हो बेटा एंगल? शिप के। 180 के साथ? यस 180 के साथ? तो बेटा ये किसने बोल दिया कि शिप जो है वो 180 पे रहेगा? सर, मैं कोर्स से 30 डिग्री ऑन पोर्ट बाव है, तो मैं अगर 30 डिग्री मतलब पोर्ट पे इस लाइट हाउस को रख के मैं चल रहा हूँ, तो मैं उसका मतलब जो 30 डिग्री का अपोजिट कोर्स होगा वो कोर्स ड्रॉ कर रहा हूँ मैं लाइट हाउस से, 210 होगा जो कि। सर बेसिकली वो कह रहा है कि बेरिंग लगा रहा हूँ मैं 30 डिग्री की। बट यस बेटा मुझे ये बताओ, सर लाइट हाउस से 210 बनेगा ना, अगर हमारे 030 है तो। नो आई, ओके, सर उसने बेरिंग लगाई है 30 डिग्री की लाइट हाउस की। ठीक है, तुमने लाइट हाउस की, एक मिनट बेटा, सो तुमने यहाँ से 210 की बियरिंग लगा दी, लेट अस से ये 210 की बियरिंग आ गई बेटा, यस सर। ठीक है, ये 210 की बियरिंग आ गई हमारे पास, ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ये 210 की बियरिंग हमने क्यों लगाई? क्योंकि लाइट हाउस दे रखा था 30 डिग्री पोर्ट बाव पे होना चाहिए। यस सर। ओके, सो अब मुझे ये बताओ कि अगर लाइट हाउस को पोर्ट बाव 30 डिग्री पे रखना है तो हमारा कोर्स क्या होना चाहिए? अब तो कोर्स भी आ सकता है ना? लाइट हाउस की बियरिंग 210 है, ओके, हमें इसे 30 डिग्री पोर्ट बाव पे रखना है, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि शिप का जो कोर्स है वो इस बियरिंग लाइन से 30 डिग्री इस एंगल पे होना चाहिए। शिप अगर ऐसे होगी तभी तो ये 30 डिग्री पोर्ट बाव पे आएगा, यस सर। है ना? यस सर। राइट, तो अब बेटा मुझे बता सकते हो कि शिप की हेडिंग क्या होनी चाहिए? 060। वेरी गुड, इट शुड बी 060 फॉर द लाइट हाउस टू कम ऑन द पोर्ट बाव, राइट? यस सर। तो अब मैं क्या करता हूँ बेटा, ये मेरी पोजीशन है, यहाँ से मैंने 060 का कोर्स ड्रॉ कर दिया, ये रहा 060 का कोर्स, दिस इज 060। सो अब तो ये दिक्कत आ गई कि हमारा जो ट्रैक है वो ये बियरिंग लाइन को कहीं कट ही नहीं कर रहा है, अब क्या करें? ओह सॉरी, समझे बेटा? यस सर।
ठीक है सर, पहले वाला मेथड ठीक है सर। राइट। सो अगर ये लाइट हाउस को 30 डिग्री पोर्ट बाव पे रखना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि 210 की बियरिंग पे ही होगा, इट कैन हैपन ऑन एनी बियरिंग। ओके, सो ये हमें पता करना है कि हमारा कोर्स टू स्टीयर क्या होगा, तभी हमें पता चलेगा कि लाइट हाउस की बियरिंग क्या होगी। ये हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अगर पहले से डिसाइड किया तो अब देखो इस केस में शिप जो है ये तो इस बियरिंग लाइन को कहीं पे कट ही नहीं कर रहा। राइट बेटा, अंडरस्टूड? यस सर। ओके, सो चलें बेटा आगे। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? और कोई डाउट है इसमें बेटा? ओके, वेरी गुड। So beta, once we have done this, now we are ready to go into our next assignment, assignment number 2. So मैं आपको ये assignment भी अभी WhatsApp ग्रुप पे डाल रहा हूँ, और इसके साथ ही मैं जो solution है वो भी आपको डाल दूंगा for your reference, so that when you do these questions on the chart you can match your working. So just give me a minute, I will put the assignment in your group. So beta, I have sent the assignment on your group. So there are total 5 questions in this assignment. जो डेविएशन कार्ड है, ल्यूमिनस रेंज डायग्राम है, वो मैंने पहले आपको भेजी हुई है. द सेम डेविएशन कार्ड इज़ टू बी यूज्ड हियर. सो अब आपने इनको प्रैक्टिस करना है. आई हैव सेकेंड लेक्चर विद यू ऑल्सो बेटा, 9 to 10. यस सर। Very good. So you can devote that lecture to doing this assignment. Okay. आपकी अटेंडेंस हो गई है बेटा या अभी होनी है? हो गई है सर। सर ओके, हाँ बोलो बेटा. अभी सर एक बार और होगी सर 9 बजे के लिए। ओके, रियल वाले तो अभी बोलो बेटा. One more doubt was there na beta? Somebody was asking about position circle. What was that doubt? सर अगर एक लाइट हाउस से 2 पोजीशन सर्कल हमें गिवन होते हैं तो उससे हम पोजीशन निकाल सकते हैं। ओके, मुझे बस ये बताओ बेटा कि दोनों पोजीशन सर्कल सेम टाइम के हैं या अलग अलग टाइम के हैं? अलग अलग टाइम के हैं सर। अलग अलग टाइम के हैं, निकाल सकते हैं बेटा. जैसे इसी केस में मैं बात करूँ सर, एक पोजीशन सर्कल 7 माइल का बन रहा है, एक पोजीशन सर्कल 3.5 माइल का बन रहा है, तो हम सेम मेथड यूज करेंगे ये वाला या फिर कोई और दूसरा मेथड? नहीं बेटा, नहीं, बिल्कुल अलग मेथड यूज़ करेंगे. मैं आपको अभी चार्ट पे दिखा देता हूँ.
Let's go to the chart. Okay, you can give me any values beta. This is a lighthouse which we have here. कोई भी दो पोजीशन सर्कल अपनी चॉइस के दे सकते हो. Tell me. एक 5 माइल का, एक 7 माइल का सर। वेरी गुड. सो ये हुक हेड पे मैंने एक लाइट हाउस जो मुझे दिखाई दिया, इससे मुझे पोजीशन सर्कल मिला. ये पहला पोजीशन सर्कल है मेरे पास एंड इसका रेडियस है 5 माइल्स, राइट? यस सर। अब बेटा मुझे इसका टाइम बता दो कि ये किस टाइम पे मिला आपको. 2000। So let's write down. This is a position circle for 2000 hours. Okay. अब आप बोल रहे हो कि एक और पोजीशन सर्कल है हमारे पास, इसी लाइट हाउस पे है. यस सर। ओके. कितने माइल का रेडियस है बेटा? 7 माइल सर, 2100। वेरी गुड, 7 माइल्स. ये मैंने दूसरा सर्कल बना दिया, 7 माइल्स का सर्कल है ये. सो लेट्स राइट डाउन द रेडियस. रेडियस है 7 माइल्स और ये जो सर्कल है ये सर्कल है 2100 आवर्स का. सो लेट्स राइट विद रेड 2100 आवर्स. अब मुझे बेटा बस इतना बता दो कि शिप जो है ये कौन सा कोर्स स्टीयर कर रहा है और किस स्पीड के साथ चल रहा है. ये तो वही केस हो जाएंगे ना फिर, जो ट्रांसफर ऑफ पोजीशन सर्कल वाला होता है। दैट्स राइट बेटा, दैट्स हाउ दिस विल बी डन. ओके, फिर तो कर लूंगा ना सर। मैं इसी क्वेश्चन में लॉजिक लगा रहा था कि मैं कि अगर जैसे ये पिछला क्वेश्चन हमें दिया था, इसको दूसरा तरीका अगर कोई सोल्व करने का हो तो वो कैसे होगा? नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, जो ये पिछला क्वेश्चन हमने अभी किया है, इट्स ए टिपिकल क्वेश्चन जिसमें हमें बाउ एंगल दिया जाता है और डिस्टेंस ऑफ दिया जाता है. इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज करके ही सॉल्व करते हैं. सो ये जो क्वेश्चन है इट विल बी ए ट्रांसफर ऑफ पोजीशन सर्कल. ये सर क्लियर है सर, हो जाएगा फिर तो। ओके ओके, और डाउट्स बेटा? वेरी गुड. सो बेटा अब आपने क्या करना है, यू कैन गो फॉर ए ब्रेक नाउ एंड once you come back, attendance you said will be at 9:25. 9 o'clock. 9 o'clock na. So get done with your attendance, it's almost 9 o'clock now, and after the attendance remain logged in the class and you can continue working on the assignment which I have sent. So आपने चार्ट ओपन कर लेना है, असाइनमेंट ओपन कर लेनी है, जो फॉर्मूले हमने नोट किए हुए हैं उनको ओपन कर लेना है और असाइनमेंट शुरू कर देनी है. सो नेक्स्ट लेक्चर इज डिवोटेड टू असाइनमेंट प्रैक्टिस एंड जो आपके डाउट्स आते जाएंगे जस्ट कीप ऑन नोटिंग देम डाउन. नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी कवरिंग अप योर डाउट्स इन द असाइनमेंट बिफोर प्रोसीडिंग अहेड. ओके बेटा? ओके सर. ओके सर. ओके बेटा, ओके, ऑल राइट. So I'll see you in the next lecture then. Okay, sir. Okay, beta. Thank you. Bye bye.